Are we live? Am I live? Yes, I am. Shivanizdiary is live. And today I decided कि अब मैं दोपहर के भी सेशंस करने वाली हूँ क्योंकि अब हो गई है ठंड और इससे पहले आलस मुझे घेर ले. I think I should start this दोपहर वाला live after lunch because I don't want to sleep. Is there भाई कैसा लाइट आ रहा ना अच्छा सा. Share lady. Okay. चलो 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 स्टार्ट करते हैं. कहाँ थे सेव हो गया ये. Share lady. So I was doing bio का revision और ये ट्रेन में भे कर रही है. Oh my god. I should, I think, start this revision part. बहुत है. भाई ट्रेन की भे ट्रेन की पे शुरू हो गई है. Should I mute? I guess I should mute this. Hey everyone, who is there? Who's there? खुल जा भाई खुल जा. Okay. Who is there? 8 people. कोई शांत नहीं रहेगा. मेरे ब्रेक टाइम में कोई शांत नहीं रहेगा. कहाँ थे? Page number 19. We're on page number 19. नहीं 18 पे थे ना. 18 हो गया 19. Okay. Strange. Who is strange? अच्छा everyone is stranger here. Hi strangers.
एक्चुअली आई कैन टॉक फॉर दिस लास्ट 3 minutes. उसके बाद मेरा माइक म्यूट होने वाला है एंड आई विल बी फोकस्ड ऑन स्टडी. उसके बाद 1 घंटे के बाद ब्रेक होगा. सो यू कैन टॉक टू मी. मैं बुरा नहीं मानूंगी. कहा थे यार, पेज नंबर 19. What are you up to, a strange person? भाई देखो, मेरे को तो नींद आ रही थी, सो आई थॉट कि पढ़ाई कर लेता है. दिस इज 9. ओके. Page number 6, question number 6 is what I think I should. Okay, this. Okay. Now page number 4 is like this. 5 का तो नहीं पता. 6 is adrenaline. हाय प्रेम, पहुंच गए लाइब्रेरी? मेरी ऑनलाइन लाइब्रेरी है जो सब देख सकते हैं. टेन है, पेज नंबर 8. Okay guys, it's 3:10. Now I'm muting my mic, not my mouth. Wait a minute. यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक टाइमिंग एंड फिर करते पढ़ाई. Break time is like 4 p.m. Okay, let's start our session. Bye bye. Okay. Page number 20 में क्या था? 20 page number. X-rays over. Which of the following race waves is used to know the development of the cracks in the air? It's ultrasonic waves. It's very easy. Just employees found in seeds. Seeds over here. Rejection causes genetic variation because of all of the above. Answer is D. Okay, now question number. बस इतना ही था. Okay. Now next question is, where does fertilization occur? It's in ovary duct. Fallopian tube, no? So it's B. Okay. Okay. It is chloroplast. तो ये तो चलो इजी सीखा चाहिए. ठीक है, ये तो
close कर. Okay, the byproduct of the photosynthesis is. Okay, I should mute this mic, I guess.
I think. Okay. Now it grows horizontally in the soil. Who's there? एक्चुअली मेरे घर के तरफ ट्रेन आती है तो आवाज़ आती है, सो आई नीड टू पुट दिस माइक ऑन म्यूट. Ginger is a stem, not a root, because it stores food material. It has no cenotono. It grows horizontally in soil. It lacks chlorophyll. So the answer is because it's stem, not a root. Because the answer is B, I guess. B होगा इसका. हाँ सही. Okay. Now, which of the following is a plant hormone? It's cytokinin. Cytokinin is a plant hormone, or it's a plant hormone ना. ऑक्सीन भी है, साइटोकाइनिन भी है, ये तीनों होगा ना आंसर. सो आंसर इज डी. आई ए साइटोकाइनिन. ऑक्सीन भी तो है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट hormone? Plant mainly contain 5 hormones: oxygen, tryptophan, cytokinin, ethylene. अब plant hormone. सो आंसर ए कैसे है? बस साइटो ऑक्सीजन भी तो है. Plant hormone also are types of chemical that regulate plant growth. Plant mainly contain 5 hormones: oxygen. अरे तो ये आंसर तो डी होना चाहिए. ये क्या कर दिया? क्या है ये? तो क्वेश्चन मार्क लगाओ यहाँ पे. होगा ना. Pollution is best defined. Pollination is the transfer of pollen grain from anther to stigma, germination of pollen grain, growth of pollen tube in ovule, visiting flowers by best defined. Transfer of pollen grain from anther to stigma. So answer should be A. Okay. Next is a plant bird is embryonic suit. Embryonic leaf, endosperm और embryonic shoot हो गए. What is endosperm? Who is there? Who will answer this? Endosperm. मेरे दिमाग में नहीं है. क्या है endosperm? एक बार देख लेते हैं. What is endosperm? Endosperm. कोई बायो वाला हंसेगा नहीं मेरे नॉलेज पे. Endosperm is nutritive tissue formed after double fertilization in angiosperm. That अब ये angiosperm क्या है? That provides food to developing embryo. Okay. Found in angiosperms only. Fertilization. What is angiosperm then? मेरी बायो इतनी अच्छी हुआ करती थी बचपन में, अब इतनी ख़राब हो गई कि मेरे को एंजियोस्पर्म नहीं याद है कि क्या होता है. एंजियोस्पर्म. व्हाट इज एंजियोस्पर्म्स? बायो की टॉपर. ओह माय गॉड, ये दिन आ गए मेरे. एंजियोस्पर्म्स आर प्लांट इन विच सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी. ओके. जिसमें सीड इनक्लोज्ड होता है तो वो एंजियोस्पर्म विद फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी. ओके. और एक जिम्नोस्पर्म भी हुआ करता था ना. जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स कुछ तो था ऐसा. जिम्नोस्पर्म. Let me हो. जिम्नोस्पर्म्स क्या है? Gymnosperm. Gymnosperm is a producing plant in which seeds are naked, not enclosed in fruits. Okay. तो जिसमें कवर नहीं रहता वो जिम्नोस्पर्म है, और जो उसमें कवर रहता है वो एंजियोस्पर्म है. बिकॉज जिम में लोग कवर होके नहीं जाते. What a bad trick, but still.
Okay, so this is like angiosperm, not ये क्या टाइप हो जाता है? एंजियोस्पर्म जिसमें कवर होता है इनक्लोज्ड सीड, इनक्लोज्ड सीड्स, और जिम्नोस्पर्म, नॉट जिम्नोसॉन्ग, जिम्नोस्पर्म्स नॉट इनक्लोज्ड। ठीक है, ये हो गया। और क्या था पूछ, क्वेश्चन क्या था भैया? व्हाट वाज द क्वेश्चन? इंडोस्पर्म। ओके, सो व्हाट इज इंडोस्पर्म? Hi, MD. MD is a short form. What is endosperm? Okay. Endosperm is a nutritive tissue formed after double fertilization in angiosperm. Angiosperms are जो कि जिसमें seeds enclosed है, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म होता है वो इंडोस्पर्म्स है। ओके, फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स ओनली एंड origin formed by fusion। ठीक है, endosperm is not haploid, it's triploid. It is not formed by fertilization of egg. Okay, let it be. It's a tissue that is formed after double fertilization in angiosperm. इतना काफ़ी है जानना, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंडोस्पर्म्स हो गया। ये कहाँ। ठीक है, फिलहाल तो मेरी नैया इधर उधर घूम रही है, कभी यूपीएससी हो रहा है, कभी बीपीएससी हो रहा है, सो आई एम नॉट श्योर। अभी मैं एईडीयू के लिए पढ़ रही हूँ। AEDU is exam conducted by BPSC, is going to be conducted because आज तक हुआ नहीं है। कहाँ थे? ग्रैंड हो गया, बाय प्रोडक्ट। Endosperm. Okay, so a plant bud is embryonic shoot. Okay, now next is plant which grow on saline soils is halophytes। तो ये पता है। Which of the following plants have modified stem for to store food materials? I think it's ginger, ginger, potato, ये सब modified है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? तो ये ल्यून हॉक। हाँ, व्हाट इज कंडक्टेड इन वस्कुलर प्लांट्स बाय वाटर? जाइलम से होता है। फूड फ्लोएम, क्या है जो भी है, फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड soluble minerals from root to ठीक है। A plant is obtained like a mother from seeds भी हो सकता है, तो यहाँ आंसर सी होगा, सी हो। डन। प्लांट्स आर फॉर्म लाइक प्लांट, ये तो हो गया। उसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन दिस सॉइल डेफिशिएंट इन व्हाट? नाइट्रोजन, तभी वो खाते हैं कीड़े। सो आंसर इज सी। ओके, now which pigment is essential for nitrogen fixation by leguminous plant? Is essential, I don't know, and एंथोसाइनिन, पता नहीं, इसका तो आंसर नहीं पता, बी होगा। ओके, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये हो गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट इन टर्म्स ऑफ लाइफ साइकिल, इट शुड बी फ्लावर।
फ्लावर आई गेस, क्योंकि फिर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी उसकी। सही। Next is the stem of the plant has been distributing food at to all parts of the plant. It also helps in stem, also helps in what the shaping में भी हो जाएगा, storing of food, shoots, stem, food store करते तो हैं, photosynthesis, respiration. I think इसका आंसर E होगा। Very nice. The most important part of the plant in terms of its life cycle ये हो गया है। Stem cutting is done generally to grow cotton तो नहीं होगा, banana भी नहीं होगा, sugarcane. Answer should be B. ठीक है। Okay, next is pea plant is what? Legumes are highly nutritious because they are rich in this is protein. So 19 का I guess not a correct match. ये तो नहीं पता, पेटोला अटैच, ये तो ठीक है, लीफ ये सही है। उसके बाद thick hard stem with branching near base tree होगा, weak stem which cannot stand upright is creeper. So the answer should be D. हाँ गलत हो गया, क्या होगा फिर? बी होगा आंसर। अच्छा, नॉट अ करेक्ट मैच। वेरी नाइस, अगेन अ सिली मिस्टेक। थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस, इट इज श्रब्स ना, तो ये गलत होगा इसमें। क्वेश्चन था कि नॉट अ करेक्ट मैच। सिली मिस्टेक्स। Okay, petal is a stalk that water reaches great heights in trees because of the suction pull caused by transpiration. So answer should be C. 22 का C, ठीक है। उसके बाद क्या है? The edible plant of lychee is thalamus, aril और aril। या यार, ओके। मेरी बहन चला रही है। Pollinated flowers have pollen grains that are dry and stick. Water pollinated flowers have pollen grains that are light and smooth. I think uh, that have pollen grains that are sticky, light and smooth. Water pollinated. Not sticky. I think B होगा, but I'm not sure. A, okay. तो ये गलत हो गया हमारा। Water enters from soil into root hairs of plant due to capillary. Water enters from soil into root hairs, तो बी होगा इसका। ये हो गया गलत, गलत गलत हो गया। ओके, कोई बात नहीं। What is the movement of leaves of what is the movement of the leaves of the sensitive plant Mimosa pudica called? C, सी होगा इसका।
27 का सी डी। ओ माय गॉड, ये कौन सा चैप्टर है? Which of the following is a vegetative hormone? Vegetative hormone is 28 का ए होगा, so it's A I guess. Okay, ठीक है, इसमें 2-3 गलत हो गए हैं मेरे. Water pollinated flowers have the pollen grain that are light and smooth. Water enters from soil into root hairs through osmotic pressure. And what is the movement of leaves? So this, the answer is D, none of the above. The movement of leaves sensitive to Mimosa pudica is the character is found in some plant which cause the is अच्छा sigmoidosity seismic response. Seismic response is the answer. Okay, next question क्या है? Among the following which is not a true fruit? Grape, apple, date, plum. ये बार बार कंफ्यूजन हो जाती. ग्रेप है, जिसमें सीड नहीं, मतलब जो ओवरी एक तरीके से रिपेंड ओवरी है. एप्पल, इट्स नॉट एप्पल, नहीं, ग्रेप होगा. क्या होगा आंसर? क्या है? प्लम, ग्रेप, व्हाट इज दिस? एप्पल. पता था यही होगा, गलत हो गया मेरा. हाँ, क्यों होता है ऐसा? पाइन, फिर स्प्रूस, cedar, larch and are the famous timber yielding plants, of which several also occur widely in the hilly region of India. All this belongs to monocotyledons. देखो, एंजियोस्पर्म भी क्या हुआ? उसमें कवर रहता है, नहीं रहता है. मोनोकोटिलेडन, आई थिंक द आंसर शुड बी सी, बट आंसर होगा बी, और मेरा हो गया गलत. Okay, so the answer is मोनो. क्या था आंसर? क्या था? बी, जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म का आंसर. ओके, so the answer is B. The part of flower that gives rise to a fruit, it's ovary. So the answer is C. Okay, next is clove. Spice is a flower bud, so answer should be D. D होगा यहाँ पे. Okay, now next is part of flower that is, ठीक है. What is the scientific name of spice? Coriander, turmeric, and scientific name of spice. Oh my god, who is there? Hello. How are you? What is the scientific name of it? This is coriander, turmeric. It's also C.
Hi, hello, hello. Quinine is a common drug for mazar that is obtained from plant. ये भी स्टेम बाक ही होगा और होना. Where does the aspirin come from? Aspirin comes from um, aspirin, I guess. It's it antibiotic, antipyretic, I think. I'm not sure about this though. Antipyretic है, but I am not sure about this answer. Okay. The longest living tree is the largest tree is redwood, or which has the highest tree, the smallest, angiospermous. No idea about this one also. Which of the following is an example of binomial scientific name? Which one of the following is example of binomial scientific name? Snow leopard, green China roach, और या राना. आई थिंक सी होगा इसका. सी होगा. सी. ठीक है. Which of the following food? Which of the food grains is richest in protein? Soya bean. Okay, it's very common. The largest flower तो पता है, ये बहुत easy सा question है. Next question. भाई बच्चे मन के सच्चे चिल्ला रहे हैं. Lenin is agora. What is this? Cloth and origin कहाँ से? तो कोई होगा 1. बी का 1 होगा. ठीक है. और सी का 4 हो जाएगा. बी का 1 हो जाएगा. सी का 4 हो जाएगा. So the answer should be C. Okay. Nice. Very good. Nice. मतलब मेरे को लगा था. I was not sure about it. कितने क्वेश्चन बाकी हैं अभी? बहुत सारे. 30 तक आए अभी. Now next question is क्या है? बैक्टीरिया ने वायरल. ये तो पता चलो वायरस है. जो तू मेरा हमदर्द हो, जो तू मेरा हमदर्द हो, सुनो. जो तू मेरा This is for Sihara taste is for color blindness. ठीक है. नहीं पता. No idea. No idea about this. Okay, the next question. The most common carrier of communicable disease is
हाउस फ्लाइज, तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है. आई थिंक आई शुड कट इट. ओके, हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एंड by introducing live harmless actually live E होगा क्या? harmless piece of not live C होगा इसका आंसर. 5 का C, 5 का E. भाई जब भी A और C में कंफ्यूजन हो और तो में ही लगाओ, C सही होगा. so कट हो गया. 22 incubation of hepatitis B virus is 30 to 60 days, 30 to 180 days. So as baby. फाइव का आंसर ए होगा. ओके, और चिल्लाओ. Which of the following bacterial disease that is called as splenic fever? The answer is B. Okay, correct. Collect. Every year, 5 lakhs of Indians die of a disease. This is tuberculosis. TB सब पता है. Next question is decomposers of the dead organisms. So इसका होगा B answer. The answer is B. Okay. Next, female can be rescued from a male because at right angle to at an angle with parallel to. अरे यार. So it can be sunburn कटरा. I think इसका आंसर E होगा. सही है. What happens due to iron deficiency in body? Anemia. Stranger. Oncogens are associated with cancer. Cancer. It affects and multiplies within the liver cells before
Next is in respect of women, men can suffer more color blindness is X chromosome. They have only one X chromosome. हाँ, so 6 का C हो जाए. वन है तो क्या हो जाता है? क्यों नहीं कर पाते? मतलब अगर जैसे वन एक्स क्रोमोजोम है तो कलर ब्लाइंडनेस इज इनहेरिटेड एक्सलेंट रिसेसिव है. अगर अच्छा दोनों एक्स होगा तो एक डोमिनेंट हो जाएगा, एक डोमिनेंट हो जाए तो नहीं होगा. अगर एक है और वो रिसेसिव है तो फिर वो कलर ब्लाइंडनेस. Okay, next question. Besides spreading malaria, anopheles mosquitoes are also vector of what? C. Filariasis and और डेंगू के लिए वो अलग आता है. डेंगू कौन करता है फिर? एनो. हाँ. और डेंगू मस्कीटोज आर डिफरेंट. This is related to what? I. So this is something different. ये बार बार मेरे दिमाग से निकल जाता है. एनो एनोरेक्सिया स्लीप डिसऑर्डर है. तो टू सही नहीं, टू गलत है. टू गलत है तो पूछ के रहा करेक्टली मस्ट. ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑल तो होगा नहीं तो सी होगा. 11 का सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Intestinal infection caused by 3 species of tapeworm, which ये क्वेश्चन मेरा हमेशा गलत होता आया है बिकॉज आई डोंट नो द फैक्ट्स. भाई ये ट्रेन बायोटेक्नोलॉजी नहीं करना. Male clones are created by the practice of एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी तो है शायद डॉक्स में है मेरे. ये बायोटेक्नोलॉजी होगा. The process of determining the relative position of genes on a chromosome is called gene mapping. Then I'm walking to the. अच्छा ठीक. How do vector so we can cut it ना. ये हटा दो. How do vector vaccines work to provide immunity? By entering directly into the cells and enabling them to spike, create by placing the virus. Vector vaccines work to provide immunity by introducing weakened and inactivated virus. I think the answer should be A. Not think. I'm sure the answer is A. Oh, I hate this train. Bye.
कौन नहीं जानता है, नहीं डावन is the answer. Next is name a clinical trial in which blood is transfused from recovered COVID-19 patient to a coronavirus patient who is. Name a clinical trial in which blood is transfused from recovered COVID patient to a coronavirus patient. दोनों तो बात वही है ना. Who is भाई ये क्या है? Plasma therapy. I'm not aware of this. So नहीं पता. The normal temperature 98.6. सी हो गया यार. ये क्वेश्चन है. चलो अब क्या नेक्स्ट इज whether the following can be used for biological control of mosquito. Oh my god. Ointment, DDT. गंगोसे तो DDT क्या है? The following can be used by control of mosquitoes. तो DDT किस चीज़ के लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो let's बंतो बंती मेरा गीत कर दो गोरा और फ्रॉम sheep नहीं रैबिट. गलत बात है. A nail is nailed into the trunk of a tree at a point of the soil. After 2 years, the nail will move sideways, move up. None of it. C होगा. क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं मूव अप? वहीं पे रह जाए. टिश्यू डेवलप नहीं होगा उसका. तो remain at same position. Oh my god. ऐसे कैसे हो सकता है? Such a good question. The Nobel Prize for developing treatment of Parkinson's disease was given to Arvid Carlson. I think you should put it in docs. क्योंकि ऐसे लगेगा कुछ तो याद है बट याद है नहीं. डॉक्स में डाल दो उसको. Add in docs. Okay. Next question is which of the following diabetes days. तो ये पता है 14 नवंबर is diabetes days. डेज नहीं डे. ठीक है. कन्वर्ट फॉर्मूला. अच्छा ठीक है. अब हम अब Brigade is engaged in the prevention of. 4 बज गए पर पार्टी की अभी बाकी है. The date is known as diabetic state. ठीक है क्योंकि अपन the Indian segment of Bill and Melinda Gates Foundation is engaged in the prevention of what? FNM is sponsored by the Bill Gates to reduce the spread of HIV in India. ठीक है. Okay. ओदी. The normal human body temperature on a cells. तो ये कर लो.
ये कर लो, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, ओके। द लाफिंग गैस यूज्ड बाय डॉक्टर्स एज ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, सो आंसर इज सी। सी इज द आंसर। भाई nitrous oxide. Okay, so when antigens are introduced in the body through vaccination, antibodies are produced to fight the infection. T cells or B cells? T cells. Only T cells. B cell. No, I'm not sure about this. B cell होगा ना? Okay. तो ये हटा दो, ये हटा दो, यहाँ लगा दो। ये हो गया बी सेल का, ठीक है। इसके बाद क्या है? When we eat the meat of goat or sheep, then we are the primary, secondary, tertiary. Carnivores are secondary, humans are omnivorous, so tertiary एक टर्म है, नहीं है? सेकेंडरी कैसे हो जाएगा? कार्निवोरस, प्राइमरी है प्लांट्स, सेकेंड, अच्छा प्राइमरी कंज्यूमर है। ओके, प्रोड्यूसर नहीं है ना, कंज्यूमर की बात हो रही है। वेजिटेरियंस आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और ओमनिवोरस मतलब ह्यूमंस जो है टर्शियरी कुछ नहीं होता। ओके, ठीक है। लास्ट पेज है। Now next is at what age can polio drop given? What is can polio? 6 weeks, 1 years. ये अजीबोगरीब क्वेश्चन क्यों होते हैं? Where is where is the smallpox vaccine made? From tree or from ship? स्मॉलपॉक्स वैक्सीन सबसे बनते हैं भाई। क्या है ये क्वेश्चन? A substance added to a food containing fats and oils is called rancid. The answer is B or C, antioxidants. Antioxidants होगा इसका। Okay. Antioxidants. Tomato is a natural source of which acid? Tartaric acid नहीं, oxalic acid. Oxalic acid. Tartaric is जो यार इमली होती है ना। Tomatoes are natural source of oxalic acid. Protista group include Protista is unicellular eukaryotic organism. तो ये
unicellular हो जाए. Lices are sensitive to which air pollutants? To all. C. Sulfur dioxide. I am done with this. Now याद करना होगा ना फिर से सारा. Which of the following radiation is used to get relief from body aches? Infrared. Okay. So the answer is A. Okay. चलो. तो ये पूरा हुआ. 4 से ज़्यादा हो गए हैं. 4-7. So we'll take a break for 10 minutes, okay?
तेरी देखे सराहनी है. Okay, guys, we are starting our next session. अरे रहो आज this 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. ओके, तो इसके रोज का अब जो गलत हुआ है उसको रटना स्टार्ट करते हैं. Where it it? First. यहाँ पे क्या Echinodermata. Echinodermata is like सारे मराइन होते हैं और जो भी स्टार फिश वगैरह होते हैं वो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का है. वैसे तो वाले वो वार्म ब्लडेड ह्यूमंस है, बाकी जो भी रेप्टाइल्स हैं वो सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं. ठीक है, उसके बाद जो उसमें फ्लोन करते हैं और फ्रॉन स्पिरोगैरस स्पाइरोगैरस ग्रीन आर्ट. तो 3 का आंसर हो जाए. एंड ये तो आंसर ई हो जाएगा इसका.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इंटीग्रेटेड टू सेल, तो वो सारे टू बी इनर ऑर्गन्स, ओके, इंटरनल ऑर्गन्स उसमें, तो ये हो जाएगा आंसर ई। ग्लाइकोजन स्टोर इन लिवर एंड मसल्स, लिवर एंड मसल्स द ह्यूमन बॉडी इज द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो ये हो जाएगा सी बी। ओ माय गॉड, फिर से गलत हो गया ये, फिर से गलत हो गया। पॉलीसेसराइड्स, ओके। Glycogen stored in liver and muscles of a human body is in the form of polysaccharides, okay, तो ये दिमाग में रखो तुम। नेक्स्ट is the number of bones in hand, so it is 32 plus 2, is it 32 plus 2, नहीं 30 plus 2, तो 32 दांत है, 32 हाथ में बोन्स है, और 32 पैर में है, नहीं 31 है, 31 है, 31 ही है, क्यों 30, क्योंकि दो ग्रिंडल है ना, पेक्टोरल ये, लेकिन पैर में ऐसा नहीं है, पैर में बस एक है, ठीक है, तो 32 हो जाएगा हाथ में, और 31 हो जाएंगे वो लेग वाले, और अरे सिंपल सिंपल ये है कि 32 दांत है तो 32 हाथ है हमारे पास, मतलब 32 हाथ में बोन्स है, नॉट हाथ है, ठीक है, और 31 फुट वाले में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the number of bones in a human skull is 32, 31, what is this, 32, 32, 28, the number of bones in human skull is 28, क्यों 28 है, क्योंकि 28 क्यों है, क्योंकि अभी 4 जो विजडम थे वो नहीं निकले ना, तो 28 रह जाएंगे, 28, ठीक है। leg bone in human body is, it's not hollow, it's solid, so the answer is C. Okay, at the age of 20 years the number of bones in human body is 20 में वही बस उसे ही होगा, तो which of the following is not vestigial organ, what is vestigial organ, vermiform, I don't know, front flattened teeth, front flattened teeth, अच्छा ठीक है। With the following connects muscles to bone, MTB, नहीं BT, bone to bone, ये हो जाएगा टेंडन, और मसल टू मसल हो जाएगा टी, लिगामेंट, कार्टिलेज, लिगामेंट होगा यार, भी होगा, सी टेंडन, मसल टू बोन, फिर गलत हो गया, MTB, महाराष्ट्र टू बॉम्बे, ठीक है, मसल टू बोन, MTB, बोन टू बोन लिगामेंट, ठीक है। इसके बाद क्या है, द टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड इन शोल्डर्स इज आल्सो फाउंड इन हिप, तो 15 का हो जाएगा बी, ओके। नेक्स्ट इज which one the organ is affected by typhoid fever, it's intestine, करेक्ट, टाइफाइड में हो जाता है इंटेस्टाइन का, टीवी इज लंग्स, दिस इज tetanus is for like what, नर्वस सिस्टम, एंड डिप्थीरिया, इसीलिए डिप्थीरिया वाला क्या होता है, ट्रैकिया, ओके। टेटनस इज फॉर ब्रेन, लाइक नर्वस सिस्टम, भाई पागल हो जाएगा इंसान, अगर टेटनस का नहीं करवाया तो पागल हो सकता है ना।
उसके बाद बचा द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय कंजम्पशन, ये हो गया तो सोर्स ऑफ एंजाइम लाइक इज नॉट किडनी, पैनक्रियास, किडनी, हार्ट, किडनी कैसे होगा, लीवर हो, को माइकोरिजल फंजाई है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इज रिलेटेड एडवांसेस ऑकर थ्रू द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन, ये तो पता है। सर्कल वाला देखना है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन पॉलीसेचराइड्स स्टोर्ड इन लिवर मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेचराइड। पॉलीसेचराइड यानी कि मतलब ग्रुप्ड में है एक तरीके से, है ना, वो सिंगल नहीं है। उसके बाद ये हो गया 32 इन हैंड एंड 32 इन 31 इन फुट, और ये चलो ठीक है, द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज 28. Which of the following is a vestigial organ in humans? Which of the following is vestigial organ in human? Um, hmm, hmm, hmm. Front flattened teeth. Which of the following connects muscle to bone? MTB, so it's tendon. 14 का C हो जाएगा. 14 का C. Okay. नेक्स्ट इज, ये तो हो गया टेटनस, टेटनस नर्वस सिस्टम में हो जाता है। और कुछ ओके ओके, द सोर्स ऑफ एंजाइम लाइपेज इज पैनक्रियास, ठीक है, ये हो गया। स्टिप्स, मसल, नर्व, बोन, इट्स अ मसल, पक्का। Now, the enzymes which is mixed with food in our mouth is amylase, अमाइलेज ही होगा क्योंकि वही स्टार्च वाला होता है ना, अमाइलेज, ठीक है। ये क्यों देख रही हो, ये पीस नहीं देखी थी क्या, लगता नहीं देखी है, पीस देखा देखा सा नहीं लग रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड, डी होगा, ठीक है। द सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन टंग टू बिटरनेस इज, लास्ट वाला, सो सी हो जाएगा, सही है। विच ग्लैंड provides both endocrine and pancreas? 10 का C. Okay. Which part of the alimentary canal receive bile from the liver? Bile, stomach, नहीं, small intestine, bile गलत हो गया, small intestine receives bile from liver. Which of the following is not endocrine gland? पिट्यूटरी है endocrine, C होगा, दिस इज नॉट ना, तो C होगा इसका। लैक्रिमल पता नहीं क्या है ये, ठीक है। ये तो हुआ था, पता नहीं कहाँ, विटामिन तो हुआ था ना, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स, राइस हो जाएगा इसमें, ये हुआ था विटामिन। इरागो कैल्सिफेरॉल क्या है? इरागो कैल्सिफेरॉल D2 है। और कोलियो कैल्सिफेरॉल वो होता है D3 हो जाता है। जैसे एंटी कोगुलेंट विटामिन के है, ठीक है, ये हो गया, चलो हटाओ। लिवर स्टोर्स एंड लिवर स्टोर्स व्हाट?
ABC ABCDEK क्वेश्चन करना होगा इसका। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या है? रेटिनॉल तो हो गया, रेटिनॉल 0 विटामिन याद करना होगा एक बार, है ना? विटामिन का वो साइंटिफिक नेम कर लेंगे। ओके, द स्वीटेस्ट इज सुक्रोज, फ्रुक्टोज इस फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा मिठास होती है, तो ये हो गया। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ये हो जाएगा डोमस्टेट, वाटर सॉल्युबल ANC नहीं, BNC, ADK इज फैट सॉल्युबल, BNC हो जाएगा इसका आंसर। Yeast is used in the production of alcohol, so the answer should be C। ठीक है, आगे ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द, ये तो हो गया। नेक्स्ट इज निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ lungs। Okay, now next is during normal respiration the diaphragm is flattened, arched नहीं, flattened। Okay, in how many steps, तो ये वाला हो चुका है। leukemia is name of white blood cells। ठीक है, next is in which organ of the human body are lymphocytes formed। दोनों में हो जाएगा, बोन मैरो भी स्प्लीन में भी, तो ये आंसर ई हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इज नेक्स्ट adenocarcinoma, lacteals are associated with which of the following? Fat, fat absorption, the heart rate becomes बहुत ज़्यादा, तो ये हो जाएगा फास्ट, आंसर इज सी। नेक्स्ट हो जाएगा which one among the following glands is present in pair? Adrenal is present in pair, so इसका आंसर हो जाएगा ए है इसका आंसर। A is the answer। Okay, next question, जल्दी आ जाओ। Which of the following is not an antibiotic? Oxytocin is not antibiotic, it's a hormone। तो आंसर आपका ये गलत कैसे हो गया है? ये तो बहुत इजी है, आंसर इज बी। ओके, रिलीज मिल्क फ्रॉम, देखो मिल्क वाला जो है वो एक ऑक्सीटोसिन है, बिकॉज है तो है। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम? दिस इज सी। ओके, body temperature is regulated by hypothalamus। Is there, just listen me, it's hypothalamus। Okay, next is which of the following organs and body controls the body balance? Ear भी हो जाएगा, cerebellum भी हो जाएगा, rib भी हो जाएगा, so the answer should be like the more than one of the above, because cerebellum तो है ही, ear भी हो जाएगा। Sexual reproduction causes genetic variation because of सब। where does fertilization occur? तो ये ओवरी है, ये पता है। ये क्यों लगाई? ओविडक्ट है ना, इसलिए।